जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीरवनचारी। यशोदानंद यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jai Nandagaon Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Nityanand 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 Gauranga 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 Gauranga
गौरांग 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 जय गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधा कुंड जय श्याम कुंड राधा कुंड जय श्याम कुंड जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गिरिराज महाराज जय गिरिराज महाराज गिरिराज महाराज जय गिरिराज महाराज जय वृंदा देवी जय वृंदा देवी वृंदा देवी जय वृंदा देवी जय वृंदा देवी जय वृंदा देवी वृंदा देवी जय वृंदा देवी हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल टाइगर जय जय गुरु परंपरा जय गुरु परंपरा गुरु परंपरा जय गुरु परंपरा जय षडगो स्वामी जय षडगो स्वामी जय षडगो स्वामी जय रूप रघुनाथ जय रूप रघुनाथ रूप रघुनाथ जय रूप रघुनाथ जय नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर जय कृष्णदास जय कविराज कृष्णदास जय कविराज जय श्रीनिवास नरोत्तम जय श्रीनिवास नरोत्तम
श्रीनिवास नरोत्तम जय श्रीनिवास नरोत्तम जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद जय गौर किशोर जय गौर किशोर जय गौर किशोर जय भक्ति सिद्धांत श्रीला पाद भक्ति सिद्धांत श्रीला प्रभुपाद जय भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद गुरुदेव 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 जय 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 गुरुदेव 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 जय 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 नाम संकीर्तन जय नाम संकीर्तन जय नाम संकीर्तन हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय श्री गुरु परंपरा की जय श्री समावेत भक्त वृंद की जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय श्री गौरांग महाप्रभु की जय पंच तत्व की जय निताई गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तो भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् प्रविष्ट कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहम् धुनोति शमलं कृष्ण सलिलस्य यथा शरत् यथा राधा प्रिय विष्णो तस्या कुण्डं प्रियं तथा सर्वगोपीषु सैवैका विष्णोरत्यन्तवल्लभा तवैवास्मि तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवि त्वम् नय मां चरणान्तिकम् नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः नित्यानन्दम् अहं नौमि सर्वानन्दकरं परम् हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणिम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कबीरा गोस्वामी की जय। Chapter 5 Adi Leela verse 34 सूर्य मंडल जेन बाहिरे निर्विशेष ভিতরে सूर्येर रथ आदि सविशेष। English or Hindi. Just like the sun planet is outside full of effulgence and inside there is the sun god. His associates are there. So you have to cross the sunlight to meet the sun god. Similarly, it is with the whole Vaikuntha Dham. जैसे सूर्य नारायण भगवान को पहुंचने के लिए सूर्य के प्रकाश में से गुजरना पड़ता है, सूर्य के प्रकाश में से गुजरेंगे फिर सूर्य नारायण भगवान की प्राप्ति होती है। वैसे वैकुंठ जाने के लिए सबसे पहले ब्रह्म ज्योति आती है। वैकुंठ इज मेड अप ऑफ 3 regions like we discussed yesterday. First is the Brahma Jyotis, the second is the Vaikuntha planets, and the third is the Krishna Loka. These are the 3 divisions in Vaikuntha. So if you want to go to Vaikuntha, you have to pass through the Brahma Jyoti. Then you have to meet the Narayan, 400 form. Then you can reach Krishna. So Jnanis go up to the Brahma Jyoti, the yogis go up to Narayan, and the devotees of Krishna, they attain Krishna Loka. So these are the 3 kinds of realization of Bhagavan. भगवान के 3 प्रकार के साक्षात्कार हैं। ज्ञानी लोग ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं, योगी लोग वैकुंठ में नारायण का दर्शन करते हैं, और भक्त लोग कृष्ण लोक में पहुंच जाते हैं, गोलोक में। इसीलिए भागवत में कहा है, वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यद्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। These are the 3 realizations. Just like another example is, you are standing in front of a railway track in the night and a train is coming. From far you will see only light first. In the darkness you will not see anything. So you will start thinking some light is coming. Some light is coming towards me. You will think it is only light. But when the train comes closer, you will start seeing the engine and the bogies behind the engine. You will start having a little closer view. And then when the train comes very, very close in front of you, you will see that there are people in the train. Some are sleeping, some are talking, some are eating. You will see so much variety in the train. गाड़ी की पटरियों के सामने हम खड़े हैं तो दूर से गाड़ी आती है, पहले सोचते हैं कि गाड़ी खाली प्रकाश है, फिर गाड़ी निकट में आती है, हम सोचते हैं कि गाड़ी में इंजन है, सब कुछ। फिर गाड़ी एकदम और निकट में आती है तो हमें गाड़ी के अंदर सब कुछ दिखाई देता है। पुरुष हैं, लोग बैठे हैं गाड़ी में, कोई सो रहा है, कोई खा रहा है। So that variety in Goloka, in Krishna Loka, if you want to meet the predominating deity, you have to penetrate from the Brahma Jyoti. You don't have to get stuck in the formless Nirvishesh Brahma Jyoti. That is why in the Ishopanishad, the author is praying to the Lord. Hiranmayena patrena
सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पुष्पमवाप्नुरु सत्य धर्माय दृश्यते. Oh Lord, take away your effulgence. I don't want this effulgence. This effulgence, this light is actually blocking your face. I want to see your face. Oh Krishna, I want to see you face to face. I don't want this light. The truth, the real source of everything is your face, your form, your Satchidananda form. I want to see. ईशोपनिषद में कहा है, हे प्रभु, ये प्रकाश जो ब्रह्म का प्रकाश है इसको हटा दीजिए, क्योंकि ये प्रकाश के पीछे आपका मुख है, आपका स्वरूप है, वैकुंठ धाम है और गोलोक धाम है. मुझे ये धाम का दर्शन करना है, मुझे आपके मुख का दर्शन करना है. ये प्रकाश नहीं चाहिए मुझे. So we have to understand that beyond this light there is transcendental activities going on. कामाद् द्वेषाद् भयात् स्नेहात् यथा भक्त्या ईश्वरे मुने आवेश्य तत् अगम हित्वा बहवस्तत् गतिम गति. This is from the Bhagavatam 7.1.29. Beautiful verse. It said that if you worship Krishna with lust, calm, still you will attain Goloka. If you worship Krishna with dvesh, envy, if you worship Krishna with fear, if you worship Krishna with sneha, sneha means affection. The Pandavas, they worship Krishna with affection. The Kansa remembered Krishna with fear. Shishupal remembered Krishna with envy. And Gopis remembered Krishna due to calm. It was looking like calm, but it was not calm. So, different devotees worship Krishna in different ways. But even they attain the highest destination. Gatim Gati. So what to speak of those devotees who worship Krishna favorably? जो काम से कृष्ण के पास जाता है, द्वेष से जाता है और भय से जाता है और स्नेह से कृष्ण के साथ संबंध जोड़ता है, उसको भी परम धाम की प्राप्ति, परम गति की प्राप्ति होती है. तो जो भक्ति भाव से भक्ति करेगा उसका क्या कहना है. यथा अरिनाम प्रियानाम च प्राप्यम एकम इवोदितम तद्ब्रह्म कृष्णयोरैक्यात् किरणार्कोपमोजुषा. Bhakti Rasamrit Sindhu, where it has been stated that the Lord's enemies and devotees attain the same destination. This refers to the ultimate oneness of the Brahman and Lord Krishna. This may be understood by the example of the sun and sunshine, in which the Brahman is the sunshine and Krishna himself is the sun. Very important point. When it is said that the demons attain the same destination as the devotees, actually the destination is the same. But in the destination there are three parts. There is Krishna Lok, Vaikunta and Brahma Jyoti. So the demons are attaining Vaikunta, but the demons are going to the Brahma Jyoti part of Vaikunta and the devotees are going to the Krishna Lok part of Vaikunta. Both are going to Vaikunta. Both are attaining the same destination, but you see, within that destination also there are three levels. तो राक्षस लोगों को भी वैकुंठ प्राप्त होता है, भक्तों को भी वैकुंठ प्राप्त होता है, लेकिन राक्षस लोगों को ब्रह्म ज्योति में प्रवेश मिलता है, सायुज्य मुक्ति मिलता है, और भक्त लोगों को कृष्ण लोक प्राप्त होता है, जहां वो कृष्ण के साथ लीला करते हैं.
So ultimately it is not the same. There is some difference. In fact, going to the Brahma Jyoti is actually a punishment. It's a punishment because when you go to the Brahma Jyoti, you cannot serve Krishna for millions and millions of years to wait. जो ब्रह्म ज्योति में जाता है ये एक प्रकार का दंड है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में आत्मा को बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है, रोग नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ब्रह्म ज्योति में आत्मा कृष्ण की सेवा नहीं कर सकता, इसीलिए वो परमानेंट पोजीशन नहीं है आत्मा के लिए। तैचे परव्यो में नाना चित शक्ति विलास निर्विशेष ज्योतिर्बिंब बाहिरे प्रकाश। कृष्णदास कविराज गोस्वामी actually is seeing the whole creation in his heart. He can see Vaikuntha, he can see the Brahma Jyoti, he can see Goloka. There is Chit Shakti Vilas. By the manifestation of the transcendental energies of Krishna, there is so many leelas going on in Vaikuntha, in Ayodhya, in Dwarka, in Goloka, and all these planets are externally, they are covered by the Brahma Jyoti. They are covered by the Brahma Jyoti. उस वैकुंठ धाम में अनंत विहार चल रहा है, नारायण का विहार, रामचंद्र भगवान का विहार, वासुदेव कृष्ण का द्वारका में विहार, और गोलोक में नंदनंदन कृष्ण का विहार, नवदीप में निताई गौर का विहार, सब विहार चल रहा है, लेकिन बाहर से इसको ज्योति से ढका हुआ है, ये ब्रह्म ज्योति से आवृत है ये वैकुंठ धाम। निर्विशेष ब्रह्म से केवल ज्योतिर्मय सायुज्येरो अधिकारी तहां पायलय। This Brahma Jyoti is the bodily effulgence coming from Krishna's body. Unlimited light is coming from Krishna's body. Ishvaraha Paramah Krishna Satchid Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarvaka He is the cause of all causes. सर्व कारणों के कारण कृष्ण है, और कृष्ण के शरीर में से जो ज्योति निकल रही है, it contains all the souls, tiny particles. We are the souls, we are manifested in the Brahma Jyoti. तटस्थ शक्ति। जो कृष्ण के शरीर की जो किरण है वो ही ब्रह्म है, ब्रह्म भी कृष्ण में ही विराजमान है, कृष्ण ही ब्रह्म के स्रोत हैं। लोग कहते हैं मैं ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता हूं, लेकिन ब्रह्म के स्रोत तो कृष्ण है, कृष्ण पर ब्रह्म है। कृष्ण इज पर, द सोर्स ऑफ द ब्रह्म ज्योति। यद ब्रह्म उपनिषदि तत्तदप्यस्य तनुभा यदात्मा अंतर्यामी पुरुष सोइति शांश विभव। पूर्ण ऐश्वर्यो षड ऐश्वर्य श्री भगवान स्वयं मयम् श्री चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परम्। If you want to understand this Bhagwan, you cannot understand without Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Charitamrita is the most deepest scripture which analyzes the whole creation. How much merciful Krishnadas Kaviraj Goswami is. He is telling us everything here. ये चैतन्य चरितामृत सबसे महान ग्रंथ है। पूरे इतिहास में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो पूरी सृष्टि का वर्णन करता है।
सब भगवान के अवतारों का, सब विलासों का, प्रकाशों का वर्णन किया गया है। सिद्ध लोकस्तु तमसः पारे यत्र वसन्ति ही सिद्ध ब्रह्म सुखे मग्ना दैत्याश्च हरिणाहत। Beyond the region of ignorance, the material creation, lies the realm of Siddha Loka. The Siddhas reside there absorbed in the bliss of Brahman. Demons killed by the Lord also attain that realm. इस भौतिक जगत के ऊपर ये सिद्ध लोक है, ये सिद्ध लोक ही ब्रह्म ज्योति है। इसमें सिद्ध आत्माओं का वास होता है और जो राक्षस भी कृष्ण के द्वारा मारे जाते हैं वो भी सिद्ध लोक में चले जाते हैं। All the demons are also residing in Siddha Lok after being killed by the hands of Krishna. There is only one demon who went to Goloka after being killed by Krishna, and that is Putana. Putana got the highest destination. She became the nurse of Krishna. खाली एक ही राक्षस था जो कृष्ण के हाथों मारा गया और उसको गोलोक धाम की प्राप्ति हुई, वो है पूतना। पूतना कृष्ण को दूध पिलाने के लिए आई थी। मातृभाव, थोड़ा मातृभाव था, तो कृष्ण ने वो मातृभाव को स्वीकार किया। She came like a motherly affection. Even she wanted to kill Krishna. She could have killed Krishna in other ways, but she wanted to kill Krishna by feeding her milk, because she can show her motherly affection to Krishna. At the same time she can kill Krishna. So Krishna took the good things of Putana, the good attitude, the motherly affection, and Krishna made him a nurse, her a nurse, Yashoda's assistant. Even now Putana is there in Goloka. When you will go to Goloka, you will meet her. Obviously she is not in the form of Putana, she is having a transcendental body and she is serving Yashoda. So even if you worship Krishna unfavorably, but if you have some affection for Krishna, then Krishna will give you highest destination. Yam krodha kama sahaja pranayadi bhiti vatsalya moha guru gaurav sevya bhavi sanchindya dasya sadrishim tanuma purete govinda mahadi purusham. थोड़ा सा भाव था पूतना का, वो भगवान कृष्ण ने स्वीकार किया और पूतना को गोलोक धाम दिया। कोई भी भाव से कृष्ण का भजन करो, क्रोध से, काम से, गुरु सेवा और यम क्रोध काम सहज भाव से, सहज क्रोध काम सहज प्रणय से, भीति से, कोई भी भाव से। रिमेंबर कृष्ण समहाउ, बाय हुक और बाय क्रुक। In the Gita, Krishna says, I am death, I will take away everything. If you can't remember Krishna in his form of Shyam Sundar, remember in the form of death. At least remember him in any form. Bhiti, spontaneously remember Krishna, no problem. That Chandrakanti Apsara, she remembered Krishna spontaneously, but Shilshti attained Krishna. कृष्ण को सहज भाव से ध्यान करो, क्रोध से, भय से, भीति से, गुरु सेवा भाव से। When you serve the associates of Krishna, your own Gurudev and the Guru Parampara, you are thinking of Krishna, because Guru is a manifestation of Krishna. शिक्षा गुरु होए कृष्ण महांत स्वरूपी ताते गुरु चैत्य रूपे. The Paramatma is our Gurudev
And the Diksha Guru and the Shiksha Guru who come from outside, they are also our gurus. So, by worshipping our Gurudev, we are actually worshipping Krishna. We are going to get the highest destination. Any bhav, any kind of mood, you should worship Krishna. सबसे परव्योम नारायणे चारि पाशे द्वारका चतुर्व्यूह द्वितीय प्रकाशे. In the Vaikuntha planets, from the 4 directions, this 4 Chaturvyuha are guarding the Vaikuntha planets, are protecting, maintaining, nourishing the Vaikuntha planets. Beyond the Vaikuntha planets is Dwarka Dham. Dwarka is maintained by their own Chaturvyuha. There is a second quadruple expansion. Sankarshan, Aniruddha, Pradyumna and Vasudev. That Sankarshan is the Mool Sankarshan. And in Vaikuntha the Sankarshan is Mahasankarshan. वैकुंठ में चतुर्व्यूह है, 4 संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव वैकुंठ के लोगों की रक्षा कर रहे हैं. और द्वारका में दूसरा चतुर्व्यूह है, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव. वहां के संकर्षण को मूल संकर्षण कहते हैं, इस संकर्षण को महासंकर्षण कहते हैं. सो व्हाई कृष्णदास कविराज गोस्वामी इज टेलिंग अस ऑल दिस थिंग्स? Because he wants us to establish the importance, the ultimate position of Nityanand Prabhu. So that we can understand what is the position of Nityananda Prabhu factually. That is why he is telling us, describing all these things about the spiritual creation. Vasudeva Sankarshana Pradyumno Aniruddha Dvitiya Chaturvyuha Ei Turiya Vishuddha. They are completely on the 4th platform known as Turiya Avastha, the transcendental platform, this 4 Chaturvyuha, and they are completely pure, transcendental. ये 4 जो चतुर्व्यूह हैं, यही बनते हैं राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में. यही 4 चतुर्व्यूह द्वारका में हैं, पूर्ण रूप से शुद्ध हैं और ये तुरिया अवस्था में है. तहां जे रामेर रूप महासंकर्षण चित शक्ति आश्रय तीनों कारणेर कारण. That Vishnu which is there is known as Mahasankarshan. She is the predominating shelter of the Chit Shakti. The Chit Shakti which is actually the whole spiritual creation is made up of Chit Shakti. Because everything in the spiritual creation is conscious. So everything is under the dependence of Mahasankarshan. He is the source of everything. चित शक्ति विलास एक शुद्ध सत्व नाम, शुद्ध सत्वमय जत वैकुंठादि धाम. ये चित शक्ति से पूरा वैकुंठ धाम परिपूर्ण है और ये चित शक्ति है, ये महासंकर्षण के आश्रय में है. एंड दिस चित शक्ति का विलास को शुद्ध सत्व कहते हैं और पूरे वैकुंठ धाम शुद्ध सत्व से भरे हुए. The whole Vaikuntha planets are full with Shuddha Sattva, which is a manifestation of Chit Shakti. This is all theoretical, but when you will enter into Vaikuntha, then you will realize all these things. Actually, you can realize this. It's not something theory. It's a science. Gyan and Vigyan. Gyan means you hear the scriptures and Vigyan means you realize the scriptures. ज्ञान का अर्थ है आप श्रवण करो शास्त्रों का, और विज्ञान का अर्थ है कि आपको ये साक्षात्कार होगा, आपको हृदय में भगवान का दर्शन होगा. इसको विज्ञान कहते हैं.
षड विधय ऐश्वर्यतः सकल चिन्मय संकर्षणेर विभूति सब जानिह निश्चय. There are 6 kinds of opulences which Krishna possesses in Goloka, and they are all transcendental, all beautiful. You can meditate on every opulence. Krishna is all beautiful. Krishna is all knowledgeable. Krishna is all powerful. Krishna is all famous. Krishna is all renounced. And Krishna is all Jnana Vairagya. Beauty we covered. Detachment. Krishna is all detached. Krishna is all popular, famous. Krishna is all powerful. Krishna is all knowledgeable. Yeah, we completed 6. So all these 6 opulences are present in Krishna. And they are made up of Shuddha Sattva. They are opulent. These opulences are very beautiful. They are effulgent. In all the Vaikuntha planets, Krishna exhibits these opulences. And devotees are continuously astonished by his transcendental qualities. वैकुंठ धाम में ये 6 ऐश्वर्य प्रकट होते हैं. भगवान बहुत सुंदर हैं. भगवान बहुत कीर्तिवान हैं. भगवान बहुत ज्ञानवान हैं. भगवान बहुत वैराग्यवान हैं. भगवान बहुत शक्तिशाली हैं. ये 6 ऐश्वर्य हैं कृष्ण के अंदर, गौरांग के अंदर. ये पूर्ण 6 ऐश्वर्य से कृष्ण सब जीवों को आकर्षित करते हैं. He attracts all the souls by these 6 opulences. जीवनाम तटस्थाख्यो एक शक्ति है, महासंकर्षण सब जीवेरो आश्रय. Then there is one Shakti known as Tatastha Shakti. This Tatastha Shakti is the marginal energy. Tatastha means that Shakti which is situated on the borderline of between the spiritual and the material world. And that Tatastha Shakti is under the direct shelter of Sankarshan, Mahasankarshan, who is the part of the second quadruple expansion in Vaikuntha. From Mahasankarshan comes Mahavishnu. And this Tatastha Shakti is resting in Mahavishnu and Mahasankarshan. And this is the origin of us. We have all come from the Tatastha Shakti. In Krishna Loka, there are Radharani creates Kaya Vyuha expansions which serve Radha and Krishna in 8 forms. In Dwarka Dham, Baldev ji creates associates who serve Krishna in 8 different ways in Dwarka. In Vaikuntha, Narayan creates his own associates who serve Lakshmi Narayan in 8 different ways. And in the 4th category we fall. We are in the Tatastha Shakti. We are created from the effulgence of Lord Krishna. Marginal life. तो 4 प्रकार के जीव हैं. पहले जीव गोलोक में राधा रानी प्रकट करती हैं उनकी सेवा करने के लिए 8 प्रकार की. दूसरे जीव हैं जो बलदेव जी प्रकट करते हैं द्वारका में कृष्ण की 8 प्रकार की सेवा करने के लिए. तीसरे जीव हैं वैकुंठ में जो नारायण की सेवा करते हैं 8 प्रकार से. और चौथे हम हैं. हम तटस्थ तट के ऊपर में हमारा प्रागट्य होता है. यहाँ होते विश्वत उत्पत्ति जाते प्रलय शेई पुरुषेर संकर्षण समाश्रय. So Mahavishnu is the cause of this material creation, and even Mahavishnu also gets his energy, Shakti, potency from Mahasankarshan. Mahasankarshan empowers Mahavishnu to create, to maintain and to destroy. Ultimately all the universes go into the body of Mahavishnu. They are created when he exhales and they go inside his body when he inhales. So he is just sleeping in Yoga Nidra and is inhaling and exhaling. That's all he is doing. And because of that we are
living, taking birth, transmigrating, taking millions and millions of births. In 100 years of Brahma, I don't know how many births we are taking. It is equal to 311 trillion years. We are taking millions of births and then we are going again in the body of Mahavishnu. And this Mahavishnu is only a expansion of the expansion of the expansion of the expansion of Nityananda Prabhu. Can you imagine the position of Nityananda Prabhu? We take Nityananda Prabhu very lightly. We think, oh, Nita is with me. But Nita is not so easy to attain. Nitai, from Nitai comes the Mool Sankarshan. From Mool Sankarshan is coming Narayan. From Narayan is coming the Dvitiya Sankarshan. And from him is coming Mahavishnu. And from him is coming Garbhodakshay Vishnu. From him is coming Shirodakshay Vishnu. And from Shirodakshay Vishnu is coming Matsya Avatar, Kurma Avatar, Vara Avatar, Nirsingha Avatar. They are all coming from Shirodakshay Vishnu. So if we tell Nirsingha Dev, you are equal to Nityananda, that is not correct. Nirsingha Bhagavan is the expansion of 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 Nityananda Balaram. So when you chant the name of Nityananda, you are taking the name of all the incarnations. The whole spiritual and material creation is included in the name of Nityananda. नित्यानंद के नाम में पूरी सृष्टि है, सब अवतार है, सब स्वांश है, सब विलास है, सब प्रकाश है. एवरीथिंग इज देयर इन नित्यानंद's नेम, इन नित्यानंद प्रभु's बॉडी. वैकुंठ बेदिया एकाईचे जल निधि, अनंत अपार तारो नहीं को अवधि. वैकुंठ बाहिरे जय ज्योतिर्मय धाम. सॉरी, यहाँ होते विश्वोत्पत्ति जाते प्रलय, সেই পুরুষের সংকর্ষণ সমাশ্রয়ে. सर्वाश्रयो सर्वाद्भुत ऐश्वर्य अपार, अनंत कहिते नारे महिमा जहार. स्तूर्या विशुद्ध सत्व संकर्षण नाम, ताहा होइते अंश से नित्यानंद राम. Nobody can describe the full glories of Nityananda because Sankarshan is only a plenary expansion of Nityananda, and Lord Ananta is singing the glories of Sankarshan with thousands of mouths from time immemorial, but still Ananta is not able to fully glorify Sankarshan. Then how can Ananta glorify Nityananda Prabhu? नित्यानंद प्रभु अनंत देव है, संकर्षण का गुणगान कर रहे हैं सृष्टि के शुरू से, लेकिन संकर्षण का गुणगान नहीं कर पा रहे हैं. और ये संकर्षण तो नित्यानंद के अंश का अंश है, तो वो नित्यानंद को कौन समझ पाएगा. अष्टम श्लोकेर कहिलो संक्षेपे विवरण, नवम श्लोकेर अर्थ सुनो दियामो. In this way I have explained to you the 8th verse. Now I am speaking the 9th verse of Sri Chaitanya Charitamrita, which glorifies Nityananda Prabhu. Maya Bhartara Jand Sangrahashrayang Shete Sakshat Karnambodhi Madhye Yasyaikam Sri Pumanadi Devas Tam Shri Nityananda Ramam Prapadye. We are so fortunate that we have taken birth in the same Kali Yuga as Nityananda, the origin of all the Vishnu Tattva. Nityananda has come and we have taken birth in the same Kali Yuga. We can directly sing the glories of Nityananda rather than singing the glories of all the Vishnu Tattva separately.
हम नित्यानंद प्रभु के उसी कलयुग में हमने जन्म लिया है जिस कलयुग में नित्यानंद प्रभु ने जन्म लिया है। तो हम इतने भाग्यवान हैं कि हम इन विष्णु तत्वों का गुणगान करने की आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्ट नित्यानंद का गुणगान करेंगे तो उसमें सब विष्णुओं का गुणगान समाविष्ट है। रूपे नित्यानंद तुमी गुणे नित्यानंद, रूपे रूपे नित्यानंद तुमी गुणे नित्यानंद, ए तुमी नित्यानंद राम मूर्तिमंत, ए तुमी नित्यानंद राम मूर्तिमंत, नित्यानंद राम अमर नित्यानंद राम, नित्यानंद राम अमर नित्यानंद राम, पतित पावन नित्यानंद राम, पतित पावन नित्यानंद राम, दीन दयालु नित्यानंद राम, अधम तारण नित्यानंद राम, अधम तारण नित्यानंद राम, नित्यानंद राम अमर नित्यानंद राम, नित्यानंद राम अमर नित्यानंद राम, नरोत्तम बड़ो दुखी निताई मोरे करो सुखी, नरोत्तम बड़ो राखो रंगा चरणेर पास, राखो रंगा चरणेर पास, राखो रंगा चरणेर पास, नरोत्तम बड़ो दुखी निताई मोरे करो सुखी, राखो रंगा चरणेर पास, नित्यानंद राम अमर नित्यानंद राम, नित्यानंद राम अमर नित्यानंद राम, नित्यानंद राम अमर नित्यानंद राम,
निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल वैकुंठ बाहिरे जय ज्योतिर्मय धाम तहार बाहिरे कारणार्णवना. Outside Vaikuntha is Brahma Jyoti, and outside the Brahma Jyoti is the Karana Sagar, the Karana ocean, the ocean in which Mahavishnu is sleeping and manifesting all the jivas and all the universes. Vaikuntadi Bediya ek ache jalanidhi अनंत अपार नहीं को अवधि. वैकुंठेर पृथ्वी आदि सकल चिन्मय माई कभूतेर ताहि नहीं जन्म होय. And there is a river, huge river, infinite, unlimited river surrounding Vaikuntha. It is unfathomable, अननोएबल. एक नदी है जो वैकुंठ के आजू बाजू व्याप्त है. वैकुंठ के बाहर है कारण सागर जहां महाविष्णु विराजमान है, और वैकुंठ के आजू बाजू एक सुंदर नदी विराजमान है. वैकुंठ पृथ्वी आदि सकोल चिन्मय माईक भूतेरतः नाही जन्म. The transcendental land of Vaikuntha is completely Chinmay, full of knowledge, full of bliss, and full of eternity. There is no Maya in Vaikuntha. The Bahiranga Shakti, the Mahamaya of Krishna, is only found in the outside Vaikuntha. It is not there in Vaikuntha. That is why no soul will ever fall down from Vaikuntha, because there is no Maya there. Prabhupada writes, all our acharyas write that it is a fact that no soul will form from Vaikuntha. Then you may ask how Jay and Vijay have come down. Jay and Vijay came down for Leela. They wanted to serve the Lord by fighting with him, giving him the happiness of fighting. जय और विजय वैकुंठ से नीचे आए कृष्ण की सेवा करने के लिए, युद्ध करके कृष्ण को आनंद देने के लिए. वैकुंठ से कोई नहीं आता है वापस इस दुखदायी संसार में, क्योंकि वैकुंठ में माया नहीं है. वैकुंठ में योग माया है और यहां महामाया है. इन वैकुंठ देयर इज योग माया. Yoga Maya brings us always closer to Krishna. In this material world there is Mahamaya. It is always dragging us down. You know, that is Maya's purpose of Mahamaya. Always pulling us down in this material world. Oh, today you should not chant so much. Oh, now Kartik is already ending. What is the use of hearing Katha? Maya is giving excuse. Oh, you are hearing Katha once in a day, that is enough. Why to hear Katha twice in a day? Instead you can sleep nicely. Maya is giving so many excuses, you know. Oh, you are already in Radha Kund. You don't have to do any bhajan. माया कहती है कि अभी तुम राधा कुंड में आ गए, अभी कोई भजन करने की जरूरत नहीं, खाली सो जाओ. अच्छा खाओ पियो.
every moment Maya is trying to give us some excuse. Every moment. So, by hearing the Shastra, we get the strength to tell no to Maya. No! सत्संग में आने से, भगवत कथा सुनने से माया को ना बोलने की शक्ति मिलती है. ये तो माया को ना कौन बोल सकता है? It is very big temptation. When Maya attacks us, how will you say no? You will say no when you are on the level of your intelligence. The mind will say yes, but the intelligence should say no, because the intelligence has to become strong by hearing Hari Katha. If the intelligence has become strong by hearing Hari Katha, their intelligence will tell the mind, no, I will chant today. I will not eat rasmalai today. I will go for the katha. Oh, it is becoming very cold now. Don't go, Maya will say. You know, there is a saying in English, there is many slip between the cup and the lip. You take the cup to try to drink the milk. Then just up to the point the milk will touch to your lips, it can fall down. You know, Maya can take the milk away right at the point when it is touching the lip. आप दूध पी रहे हैं तो दूध पीते पीते जब तक मुंह में नहीं लगाते तब तक वो फिसल सकता है. So until you come and sit down in the katha, in the fire of Krishna Leel Katha, till then Maya will stop you. But when you sit in the katha, or when you take your japa mala, when you start doing kirtan, then Maya will run away. Enechi aushadhi Maya nashi baro lagi. Enechi aushadhi Maya nashi baro lagi. Hari naam maha mantra lo tumi magi. Hari naam maha mantra lo tumi magi. Hari naam maha mantra lo. Hari naam maha mantra lo tumi magi. Hari naam maha mantra lo tumi magi. भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया. भगति विनोद चरणे. भगति विनोद प्रभु चरणे पड़िया. हरि नाम महामंत्र लोइया मागिया. By drinking this medicine, Maya will run. So you should be greedy for this medicine. Wherever pure Hari Katha is available, wherever the Shuddha Naam is available, wherever the Shuddha Leela is available, one should be greedy. One should be greedy to go and take it. लोभ होना चाहिए. जहां कृष्ण की शुद्ध कथा है, शुद्ध नाम है, वहां जाके ये औषधि को पीना चाहिए अपने कान से. When we are sitting in katha, we are actually drinking the medicine. You know that? We are drinking the divine medicine. That is why in Kali Yuga nothing is required except hearing. Parikshit Maharaj attained Goloka just by hearing. परीक्षित महाराज ने केवल सुनने से गोलोक धाम का प्राप्ति किया. हरि कथा को सुनने से 7 दिन उन्होंने सुना और उनको सब सिद्धि मिल गया.
तो कान से ये कथा को पीना है और इस औषधि को पीना है. दिस हरि कथा इज भव औषधाक्षोत्र मनोभिरामा. First it is like medicine, and then when it goes inside, it will become very sweet. Manobhiramat. It will give happiness to your mind and your heart. And then what will happen? Then you will realize your own swarup. Pravishta karna randrina svanam bhava swaroruham. So, one should be very, very anxious to always remain in the fire of Krishna consciousness by chanting, by hearing, by dhamvas, by sadhu sangha, by eating mahaprasad. One should always remain in the fire of Krishna consciousness. कृष्ण भक्ति की अग्नि में हमेशा रहना चाहिए. सत्संग में, हरि कथा में, हरि नाम में, महाप्रसाद में, हरि धाम में, तुलसी के साथ. Always. Then Maya cannot affect us. ঘরে 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 তুলসী পূজা করো, ঘরে 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 হৃদয় হৃদয় ঘরে করো তুলসী পূজা, তুলসী সেবা, তুলসী আরতি, তুলসী কীর্তন, বহু কৃপা মিলে যায়. चिन्मय जल से परम कर्षण जहार एक कणा गंगा पतित पावन. And this whole Karana Sagar and this whole river, that water is transcendental, and that when that water enters into our universe, it becomes the Patit Pavan Ganga Devi. इस कारण सागर जो है, जो ब्रह्मांड के बाहर सब ब्रह्मांड इस कारण सागर में तैर रहे हैं. ये कारण सागर का पानी बहुत पवित्र और दिव्य है, और इसका एक बूंद पानी है, वो ब्रह्मांड में प्रवेश करता है तो वो गंगा बन जाता है. गंगा मैया तोरी लहरें भक्तेरो मन भार. The divine waves of Ganga, they are very transcendental, because that water has come from Vaikuntha. That's why taking bath in the Ganga, we can attain the highest destination. What to speak of taking bath in the Ganga? But if somebody says Ganga, 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 just by taking the name of Ganga, one is liberated. All sins are finished. It is said in Chaitanya Bhagavat. केवल गंगा गंगा बोलने से सब पाप नष्ट हो जाते. बोलो गंगा माता की. और गंगा के आजू बाजू में 21 किलोमीटर ये साइड, 21 किलोमीटर ये साइड, जो भी जीव रहते हैं गंगा के आजू बाजू, वो सब जीवों को गंगा का पवन हवा स्पर्श करती है, और उन सब लोगों को कृष्ण भक्ति मिल जाती है. चलो मन गंगा जमुना तीर. " 21 kilometers on one side of the Ganga and 21 kilometers on the other side of the Ganga. Those who are staying on the two sides of the Ganga, by touching the air coming from the Ganga, the air which has touched Ganga, everyone will become devotees. So just by staying near the Ganga, it is the highest benediction. So Krishna was wondering in Goloka, what will happen to those souls who are not staying near the Ganga? Who will deliver them? Those who are not staying near the Ganga, they are staying far away from the Ganga in Radha Desh, where no Ganga is flowing. Who will deliver them? Then Krishna called Balaram and said, you are my brother, you are more merciful than me, so you should take birth in
Rada Desh, where Ganga is not flowing, and deliver the most sinful of all people. कृष्ण भगवान ने बलराम को बुलाया और बलराम को बोला, हे बलदेव, गंगा के आजू बाजू जो रहते हैं उनका तो उद्धार हो रहा है, लेकिन गंगा से दूर जिसने जन्म लिया है उनको उद्धार कैसे होगा? तो तुम जन्म लो कलयुग में नित्यानंद के रूप में राढ़ देश में, जहां गंगा नहीं है, और वहां तुम सब जीवों का उद्धार करो। राढ़ देश पहले बहुत अकाल था, उसमें गरीब था, लेकिन जैसे ही नित्यानंद का जन्म हुआ सब लोग अमीर बन गए, सब लोग धनी बन गए, सब लोग ऐश्वर्यवान बन गए और सब लोग प्रेमी बन गए। राढ़ देश वॉज वेरी पुअर बिकॉज देयर वॉज नो वाटर, देयर वॉज ड्राउट एंड पीपल वर वेरी पुअर। बट व्हेन नित्यानंद प्रभु टुक बर्थ on 11th January 1473, I made a rough calculation. I cannot say this is accurate because the Gregorian calendar was not there at that time, 500 years back. But still a rough calculation, 11th January 1473, and Gauranga Mahaprabhu appeared on 18th February 1486. So when Nityanand Prabhu appeared in Radha Desh, when he took birth in the Birbhum district, in Veerchandrapur, that name is given later on. It was known as Ek Chakra at that time. At that time, all the residents of Radha Desh became opulent. Suddenly they got wealth from somewhere. They don't even know. They became rich. All the drought was finished. And everybody was feeling very happy in their heart. Everyone became full with prem. So Nityananda Prabhu will deliver those who have no hope, like us. जिसको कोई आशा नहीं है, जो गंगा के निकट में नहीं रहता है, जो गरीब है, जो पतित है, जो नीच है, उसको नित्यानंद उद्धार करते हैं। So if you consider yourself the most fallen, then you should hold the lotus feet of Nityananda very tightly. Very tightly. Because he is our only hope. अगर हम अपने आप को सबसे पतित मानते हैं, हमारा उद्धार चाहिए, तो नित्यानंद के चरण कमलों को पकड़ के रखना। When I chant Nityananda's name, I get great hope. I feel now I'll be able to attain Radha Krishna. Now I'll be able to attain Gauranga. Even small children, when Nityananda came to Puri, he said, Gauranga is delivering everybody, but the small children, who is delivering? He called all the children in Puri and he started dancing with them. And all the children got Krishna Prem. They became like Hanuman. One child went and he uprooted the whole tree. And the other child jumped on the top of the tree and is jumping like Hanuman. And all the children became so powerful just by Nityananda Prabhu's mercy. For 30 days all the children did not eat. They were just chanting. And if their parents were worried, what has happened? They got the mercy of Nityananda Prabhu. That place is still there in Puri. It is known as Jhanjapitha Mutt. Narottam Das Thakur established. नित्यानंद प्रभु बच्चों का भी उद्धार करते हैं। जगन्नाथपुरी में सब बच्चों को बुलाया और सब बच्चों को प्रेम दिया, आनंद बांटा। सब बच्चों भी बड़ों से भी बड़े महान भक्त बन गए। नित्यानंद प्रभु सब जीवों का उद्धार करते। वो चोर आए, नित्यानंद प्रभु के शरीर में बहुत सोना था, हीरे मोती, तो चोर बोले चोरी कर लेंगे। The thieves came when Nityananda Prabhu was in the house of Raghav Pandit. He was doing Abhishek, Sankirtan was going on. Thieves came, dacoits. They said, we have heard Nitai has so much gold on his body.
In his all his 10 fingers, he is wearing gold rings with diamonds in his ankle bells, in his body. If we will steal this gold, we will become rich forever. So Nityanand Prabhu said, okay, come. And he was merciful even to the thieves. First time they came to steal, they became blind. They see only darkness. So they left, said, tomorrow we will worship Chandi and come again. The next day they came, they saw Vishnu Dutas walking outside the house of Raghav Pandit with Shankha, Chakra, Gada and Padma. So the thieves were thinking, who is this watchman? If the watchmen are so powerful, how much powerful Nityanand Prabhu must be? They were surprised. पहली बार चोर आए चोरी करने के लिए तो पूरा अंधेरा हो गया, अंधकार. तो चोर बोले नहीं हम चोरी नहीं कर सकते नित्यानंद प्रभु के पास से. दूसरा दिन आए तो देखते सब विष्णु दूत उनके घर के बाहर घूम रहे हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेके. तो चोर डर गए, बोले कोई स्पेशल पर्सनालिटी आया होगा घर में, चलो हम भाग जाते हैं. फिर वापस आए आखिरी दिन अमावास्या के दिन में. तो जैसे ही नित्यानंद प्रभु के घर के बाजू में गए, राघव पंडित के अंधे हो गए सब चोर. बारिश आने लगा, सब चोर खड्डे में गिर गए, कांटा घुस गया और खत्म हो गए. सडनली ऑल द थीव्स बिकेम ब्लाइंड. व्हेन दे केम फॉर द थर्ड टाइम, they could not see anything. Everywhere darkness. Amavasya, it started raining. They fall in the ditch, and all the thorns were, all the insects were biting them. And at that time, that thief, the leader of that thief, in the ditch, inside the hole, he was lying, and suddenly he realized, Nityananda! He called, Nityananda! Nityananda, you are not ordinary. You are God. Because whenever we are trying to steal from you, वो चोर को पता चला खड्डे में गिर गया, रात को अंधा हो गया. बाद में उसको पता चला, हाय ये नित्यानंद तो भगवान है, मैं उनसे चोरी करना चाहता हूं, नित्यानंद मेरी रक्षा करो. उसने खड्डे में से पुकारा. नित्यानंद 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 क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो नित्यानंद And Nityanand Prabhu came outside. He delivered the leader of all the thieves. Nityanand Prabhu said, I will deliver you on one condition. I will give you Krishna Prema on one condition. The thief said, what is that, my dear Prabhu? Nityanand Prabhu said, after I give you Krishna Prem, you should make all the dacoits Krishna, pure devotees. You should preach to all your group. All the thieves you gather and tell them about Gauranga and Krishna. If you preach, then I will make you pure devotee. Preach. अगर आप प्रचार करेंगे तो मैं आपको शुद्ध भक्त बनाऊंगा. नित्यानंद प्रभु ने डाकू को तो भक्त बनाया और डाकू को बोला सब डाकुओं को वैष्णव बनाओ, सब डाकुओं को अपने बुरे काम छोड़ देना चाहिए. So Nityanand Prabhu is not only merciful on that thief, Nityananda is merciful on all living entities equally. Whether they are fallen or whether they are uttama adhama kichu na kare vichar. He never sees our qualification. That is a characteristic of Nityananda. Sometimes even Gauranga sees our qualification, but Nityananda never sees our qualification. Thank you very much. Hare Krishna. Any questions you have? कोई प्रश्न है, कोई पूछना चाहता है? By hearing about Nityananda, all the questions are over. All answers are available. So, thank you very much. In today evening, 5 o'clock, will be the katha about Amnaya, about the scriptures, the
10 principles, the Dashamul in the Shastra, and how to attain, how to read the scriptures, how to attain Krishna, how not to avoid criticizing the scriptures. So everything about the scriptures we will discuss in the evening from the 7th chapter of Harinam Chintamani from 5 to 7 p.m. Thank you very much. Those who want the kathas of this Kartik kathas, I can give you on a DVD. DVD is fine. If you use a DVD, or those who want pen drive, they can tell me if they want on a pen drive. Those who want on a DVD, I can. DVD is much cheaper. It is only 10 rupees. DVD. So those who can use a DVD, I think the whole Kartik Katha of Chaitanya Charitamrit will take 2 DVDs, and 2 DVDs will be Harinam Chintamani Katha. So there will be 4 DVDs totally. But if you want on a pen drive, then you need 2 pen drives of 8 GB each, or 16 GB pen drive. So you can tell me, we'll make some DVDs. Those who want at least can take the DVDs and hear the. And I request all of you to please make a plan for next Kartik whole month to stay again in Radha Kund and give us your association. And any time during the year also, you are very welcome in Radha Kund. Please give us an opportunity to serve you. This time we could not offer you prasadam. We are sorry after the katha. So next Kartik we have a plan that everybody can get a breakfast prasadam, evening also prasadam, and then thank you very much.